हरे 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोग फर्स्ट कैंटो 18 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट लास्ट टाइम। If you don't mind, just can you brief us? Just 5 minutes. What happened last class? यस 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 श्योर। तो लास्ट क्लास Parikshit Maharaj was basically he was in the forest hunting, and then he was very tired. So काफी थकावट की वजह से he entered into this kutir of the sage over there. So we discussed about before that there was some discussion between the sages about Parikshit Maharaj and Kali. So we were discussing about those things earlier कि कली कैसे enter किया है, क्या किया है, and all those things which we are already experiencing. तो there he would now be narrating the story जहाँ पे परीक्षित महाराज जब जाके, and that is yet to come basically. So जहाँ पे जाके he would be putting that dead snake over him. तो अभी तो फिलहाल परीक्षित महाराज कली का इंटरेक्शन का ही समरी हुआ है, and they were talking about Lord Krishna. So they were glorifying Lord Krishna basically in respect to Kali. So those were the things that we discussed last time. And now we would be talking about actually that pastime जहाँ पे वो snake रखा था. um, do you want to take up this slide, Prabhu? Okay, Prabhuji. Srimad Bhagavatam 1.18. O Sutta Goswami, you are learned and pure devotee of the Lord, because the personality of the Godhead is your chief object of service. Therefore, please describe to us the pastime of the Lord, which are above all the material conceptions, for we are anxious to receive such a message. 50. O Sutta Goswami, please describe those topics of the Lord by which Maharaj Parikshit, whose intelligence was fixed on the liberations, attained the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the Garuda, the king of the bird. Those topics were vibrated by the son of Vyasashila Sukadeva. Thus, please narrate to us the narration of the unlimited, for they are purifying and supreme. They were spoken to Maharaj Parikshit, and they are very dear to the pure devotee, being full of Bhakti Yoga. 1617. Sri Gautam Swami said, "O God, although we are born in the mixed caste, we are still promoted in the birthright, simple by serving and following the great who are advanced in knowledge. Even by conserving with such a great soul, one can without delay cleanse oneself of all disqualifications resulting from lower birth." 18. And what to speak of those who are under the direction of the great devotees, chanting the holy name of the unlimited, who has unlimited potency? Who has the unlimited of potency? The personality of the Godhead, unlimited in potency and transcendental by attributes, is called Ananta, unlimited. 19. It is now ascertained that he, the personality of the Godhead, is unlimited, and there is none equal to him. Consequently, no one can speak of him adequately. Great demigods cannot obtain the favor of the goddess of fortune even by prayer, but this very goddess renders service unto the Lord, although he is unwilling to have such a service. 20. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु. सो इनकी चर्चा अभी भी चालू है, एंड नाउ दे आर अगेन requesting Shanuk Rishi and the sage are requesting Sutta Goswami to narrate the pastime of परीक्षित महाराज, और कैसे उन्होंने भगवान धाम प्राप्त किया. तो इसके बारे में और चर्चा कर रहे हैं. तो Sutta Goswami he is basically not a pure brahmana by birth. By action he is, but not by birth. तो वो यही चीज यहाँ पे एम्फेसाइज करते कि यहाँ पे भले हम लोग मिक्स कास्ट में या इस पे हम लोग बर्थ लेते, बट इट इज बाय क्वालिफिकेशन वी यू आर पुट इनटू द राइट प्लेस एज ए ब्राह्मण या जो भी हो, जो भी आपका वर्ण हो. So this is Prabhupada has expanded on this in his purport which we'll read today. So we'll just have a quick look at the different purposes that Prabhupada has mentioned for this slide. So the speaker on the transcendental activities should have only one object of worship and service, that is Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and the audience for such topic should be anxious to hear about him. Only when such a combination is possible, namely a qualified speaker and a qualified audience, it is then that then and there very much congealed to continue discourse in the transcendence. So transcendence में this is very important. जहाँ पे
हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में भी बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बोलने वाला कौन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। when we have to understand कि जब हम लोग के सामने काफी सारे लेट्स से बुक्स रखे हुए हैं विच आर बेसिकली कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, तो तीन चीज हम लोग देखे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट, वन इज हु द स्पीकर इज, सेकंड इज हु द ऑडियंस इज, लिसनर इज, एंड थर्ड इज व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इन तीन चीजों पे जब हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉरी ये तीन चीज जब रहते हैं इन डिस्कशन में, दैट बेसिकली सेज कि इन इन सारे पुस्तकों में सबसे बेनिफिशियल पुस्तक कौन सा है वो हम लोग निकाल देख सकते हैं, राइट। सो लेट्स से अगर फिजिक्स का कोई प्रोफेसर है, एकदम टॉप प्रोफेसर है, वो फिजिक्स के बारे में कुछ बात कर रहा है, एंड लिसनर इज ऑल्सो समवन हु इज द अदर पर्सन इज ऑल्सो समवन हु इज वेल नोन रेप्यूटेड प्रोफेसर, अगर ऐसा डिस्कशन रहेगा तो ऑब्वियसली दैट विल बेनिफिट अ स्टूडेंट, राइट। लेकिन मान लीजिए कि वहां पे प्रोफेसर रेप्यूटेड है बोलने वाला, लेकिन सुनने वाला कोई इंग्लिश टीचर है या फिर कोई एक नया स्टूडेंट है, तो प्रोबेबली जो डिस्कशन होगा दैट वुड नॉट वेरी एडवांस, वो बेसिक लेवल पे रहेगा। जब बोलने वाला फिजिक्स का वेल नोन प्रोफेसर नहीं है, बट ही इज लाइक ओके ओके प्रोफेसर है या फिर कोई सीनियर स्टूडेंट है एंड ही इज टेलिंग सम अदर स्टूडेंट, तो उसका टॉपिक डिस्कशन भी ऑल भी डाइल्यूटेड रहेगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली वी चेक ऑन। अगर टॉपिक ही अलग रहा, मतलब दोनों फिजिक्स के बंदे हैं लेकिन दे आर डिस्कसिंग ऑन समथिंग ज्योग्राफी, देन प्रोबेबली इट मे नॉट बी ऑफ इंटरेस्ट एट ऑल, बिकॉज दोनों एक्सपर्ट्स नहीं है, तो उसका जो कंटेंट रहेगा मे नॉट बी वेरी मच वैलिड। तो ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, अमॉन्ग अदर फ्यू कपल ऑफ थिंग्स, दिस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हु द स्पीकर इज, हु द ऑडियंस इज, एंड व्हाट इज द कंटेंट। तो यहाँ पे प्रभुपदा वापस दोबारा स्ट्रेस कर रहे हैं, the speaker is one who always thinks about Krishna. Worshipper is who is sorry, the audience is one who is eager to listen about Krishna, and the content is basically Krishna. तब ये combination होता है, then it is a proper transcendental talk. So professional speakers and a materially absorbed audience cannot derive real benefit from such discourse. Professional speakers may make a show of Bhagavata Sapta for the sake of family maintenance, and the materially disposed audience hears a discourse of Bhagavad Sapta for material benefit, namely religiosity, wealth, gratification of the senses और liberation। ये हम लोग देखते हैं, राइट। भागवत सप्ताह जो होता है लोगों के घर पे, यूजुअली नॉर्थ में मैंने काफी देखा हुआ है, तो वहां पे जो बुलाते हैं भगवत सप्ताह करने के लिए, दैट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ रिलीजियस, उसके लिए, या फिर टू अचीव समथिंग। जैसे हम लोग लक्ष्मी का फ्राइडे का पूजा करते हैं सो दैट वी गेट वेल्थ, तो दे हैव सम मटेरियल डिजायर्स बिहाइंड इट, और वैसे करके वो किसी बंदे को बुलाते हैं। और ये बंदा कौन है? ही इज द वन हु इज बेसिकली डूइंग दिस भागवत सप्ताह फॉर हिज अर्निंग, सो हिज मेन पर्पस इज टू अर्न मनी, हिज मेन पर्पस इज नॉट टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। ऑडियंस का मेन पर्पस इज नॉट टू लिसन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। तो इसकी वजह से जो कंटेंट डेवलप हो रहा है, इट इज नॉट द ट्रू कंटेंट अबाउट कृष्णा, और इससे जो बेनिफिट हो गया दैट इज नॉट अप टू द मार्क। ऑब्वियसली कृष्णा के बारे में भले किसी भी इंटेंशन से सुनेंगे, कृष्णा इज सो मर्सीफुल दैट ही हेल्प्स अस गेट सम बेनिफिट। जैसे नाम हम लोग लेते हैं कृष्णा का नाम, भले हम लोग इनअटेंटिव रहते हैं, बट देयर इज स्टिल ए बेनिफिट टू इट। द रिजल्ट्स ऑफ दिस बेनिफिट आर लो, और फिर उसको आने में काफी टाइम लगता है कभी कभार, बट इफ यू वांट इमीडिएट बेनिफिट देन वी हैव टू जो 10 ऑफेंसेस है हरिनाम के, उसको ध्यान में रखे हुए चैंटिंग करना है। एंड व्हेन यू डू दैट देन यू विल सी इमीडिएट इफेक्ट। पीपल यूजुअली कंप्लेन, अरे इतने साल से मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, कुछ होता नहीं है, ये नहीं होता है। द रीजन इज बिकॉज यू आर नॉट बीन डूइंग कंसिडरिंग द 10 ऑफेंसेस। देयर आर सम रूल्स, कुछ रूल है वो गेम प्ले में, अगर हम लोग वो गेम उस तरह से नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट लेवल भी क्रॉस नहीं करेंगे। एंड देन इफ यू कंप्लेन, अरे यार गेम कैसा है, कितना बोरिंग गेम है, कुछ नहीं हो रहा है, एक लेवल भी पार नहीं हो रहा है, ये गेम वर्थ नहीं है, देन इट इज नॉट द दैट इज योर मिस्टेक, नॉट देयर मिस्टेक। बट इफ यू फॉलो, देयर आर सम रूल्स गेम में, और वो अगर फॉलो करके अगर गेम खेलोगे देन यू वुड बी एबल टू क्रॉस मल्टीपल लेवल्स। तो ऐसे यहाँ पे भी वैसे ही होता है। एंड इवन नॉट ओनली चैंटिंग, इवन फ्रॉम श्रवणम एंड ऑल, when you do this carefully, when you choose the speaker who is interested in speaking about Krishna, and your objective of listening is also glorifying Krishna, then you will get utmost benefit out of it. Such Bhagavata discourse, Prabhupada says, are not purified from the contamination of material qualities.
But the discourses between the saint of Naimisharanya and Srila Guru Rupa Goswami are on a transcendental level. कि यहाँ पे बोलने वाले कौन थे? सुतो गोस्वामी थे. He was a transcendental person. सुनने वाले कौन थे? शौनक ऋषि थे. They were also transcendentalist. और टॉपिक पूरा भागवतम पे चल रहा था. There is no motive for material gain. Now Bhagavad Saptas are held for 7 days only, and after finishing the show, both the audience and the speaker become engaged in material activities like usual. They can do so because the speaker is not Bhagavata Pradhana and the audience is not Shushru Satam, as explained above. So Bhagavata Pradhana is basically who speaks about Krishna, and Shushru Satam is who hears about Krishna, transcendental topics basically, who hears about transcendental topics. तो भागवत प्रधान ने होने की वजह से और शुष्ट सदन ने होने की वजह से बेसिकली भागवत सप्ताह जो अभी होता है कलयुग में इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. So Prabhupada continues in his 1617. So basically 1617. So there are 3 classes of devotees, namely the Prakrita, Madhyama and Mahabhagavata. प्राकृत मतलब कनिष्ठ अधिकारी हम लोग जो बोलते हैं, दैट इज प्राकृत. सो दैट इज उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड कनिष्ठ अधिकारी. ये 3 क्लासेस यूजुअली रहते हैं. सो वी कैन आल्सो कॉल देम एज महाभागवत, मध्यम एंड प्रकृत. प्राकृत. So the Prakrita or the third class devotees are the temple worshippers without specific knowledge of the Lord and the Lord's devotees. तो ये जनरली इन मोस्ट ऑफ अस अपने केस में, एटलीस्ट इन माय केस, दिस इज स्टिल द सिचुएशन. बट पहले ये पक्का ऐसा ही था. तो वी यूज्ड टू गो टू टेंपल्स. पेरेंट्स बोलते थे टेंपल्स में जाते थे, बट वी हैड नो नॉलेज कि क्या है, कौन भगवान है, क्या है. सब एक ही लेवल पे थे हमारे लिए. एंड द पर्पस वाज ऑब्वियसली टू गेट समथिंग. या फिर हम लोग पेन में रहेंगे तो उसको पेन का निवारण करने के लिए, हम लोग निवारण करने के लिए भगवान के जाते थे, टेंपल में जाते थे. We had no idea about devotees, we had no idea about the Lord technically, and we did not even know what devotion is. अगर घर पे आरती करते हुए एक बार और अगर पे दिखा तो that means he is a devotee. वो अपना लॉजिक था. So we ritualistic और devotion में difference उस वक्त पता नहीं चलता था. Now thanks to Srila Prabhupada, we at least know the difference between what is ritualistic, who is a ritualistic and who is a devotee. There is difference between them. रिचुअलिस्टिक अगरबत्ती दिखाएगा, दिया दिखाएगा, कुछ पन्ने पड़ेगा बुक्स के, बट द गोल इज नॉट इन द डिवोशन टू लॉर्ड. इट इज बेसिकली समथिंग मटेरियल और आउट ऑफ रिलीजन करना है इसलिए कर रहे हैं. बट द स्पिरिचुअलिस्ट, एक्चुअली डिवोटी, मे और मे नॉट डू दिस थिंग्स, but he does one thing, that is he always thinks about Lord through chanting, through discussing with other people. तो वो पक्का करते हैं. The Madhyama or the second class devotees knows well the Lord devotees, the neophytes and the non-devotees as well. तो उनको पता है कि कौन कैसे है, कैसा नॉन डिवोटी किसको है, महाभागवत, वो उनको क्लासिफिकेशन क्लियरली पता है. डिवोटीज में भी क्या क्लासिफिकेशन होता है, लॉर्ड कौन है, उनको नॉलेज उनको प्राप्त हुआ है. बट द महाभागवत और द फर्स्ट क्लास डिवोटी सीज एवरीथिंग इन रिलेशन विद द लॉर्ड एंड द लॉर्ड प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट. द महाभागवत देयरफॉर डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन. जैसे मध्यम अधिकारी क्या करता है, वो ये न्यूफाइट है, तो वो डिस्टिंक्शन वो देखता है. he is able to see that. So he has progressed from kanishta, and therefore he understands what is kanishta, what is madhyam and what is uttama. He understands that. He understands the science of Krishna, but he has not put it into practice effectively. ये मध्यम है. जो भागवत जो उत्तम है वो क्या करता है, महाभागवत उत्तम, वो क्या करता है, वो उसने प्रैक्टिस में डाला हुआ है. एंड सिंस ही Krishna conscious is what seeing everything in relation to Krishna, and when he does that, when everything is creation in relation to Krishna, there is nothing kanishta or nothing for them, for those devotees. We cannot artificially do that. That will actually affect us. ये जो differentiation है महाभागवत का और मध्यम का, so महाभागवत जो करता है, it is actually beneficial at that stage, so that he can keep himself away from the association of materialistic people. वो एक लेवल पे काफी जरूरी है. वो लेवल ट्रांसेंड करने का, आगे बढ़ने के बाद, एज ए महाभागवत, देन he sees everything in relation to Krishna, and then every topic that is being spoken naturally
it is connected to Krishna. For him, there is no topic other than Krishna. If it does not, he sees no connection of any topic to Krishna, he will not be indulged in the discussion. That is Mahabhagavata. And Prabhupada says Parikshit Maharaj was such a Mahabhagavad devotee because he was initiated by a Mahabhagavad devotee, that is Shuka Goswami. He was equally kind even to the person of Kali, and what to speak of others. So compassion is one of the most important qualities of a devotee. अगर कंपैशन नहीं होगा तो how जो हम लोग जो फॉलन सोल्स है उसको कैसे वो ऊपर लाएंगे. The reason Srila Prabhupada is spreading this, he has no personal gain out of it. The only reason he's doing it is out of compassion for all of us, all of the living souls. तो उनके लिए वो कर रहे हैं Srila Prabhupada. And that is what and not only Srila Prabhupada, all the acharyas before him and his disciples as well. So it is all out of compassion. It is for the service of Lord, but also out of compassion for the fallen souls. And Parikshit Maharaj ने तो कली के ऊपर ही उसने compassion दिखाया. So what to speak about? So he was a typical Mahabhagavat. So knowledge imparted by Shuka Goswami unto Parikshit Maharaj helped him attain the service of the Lord. So Srila Prabhupada carefully uses the word service of the Lord. He does not just say कि devotion to the Lord. Even भक्ति को शिला प्रभुपाद ने डिवोशनल सर्विस करके वर्ड यूज किया. if you have observed already, तो he does not just say devotion, he says devotional service. जैसे even in our family life we must have encountered it. जब हम लोग when we try to express our love for our spouse, so their expectation is don't just say, करके दिखाओ. So probably get them something, उनको बाहर लेके जाओ. So we need to express that into some way by action. तभी जाके सामने वाले को वो express हो जाएगा, प्यार express होगा. So similarly even for Krishna, we have to do that. We have to express our love through service, through actions, और तभी जाके it will benefit us, not Krishna. Krishna तो देख लेके in our heart, if there is a genuine love, Krishna understand that. But to reach that level जहाँ पे genuine love रहेगा, we have to actually put it into action, and that is through service, devotional service. तो यहाँ पे इसलिए Prabhupada has very carefully used the word to attend the service of the Lord. हालांकि वो 7वें दिन में he actually, I mean, after 7 day he was killed by this, he was bitten by the snake, and he left the body actually, right? तो ऑलरेडी उसमें डिवोशनल सर्विस करने जैसे उनको टाइम मिला नहीं. बट ही हर्ड, मतलब उन्होंने जब भागवतम सुनाई, दैट इज आल्सो सर्विस टू द लॉर्ड. But the mood in which he heard another thing, that was the true mood for the service to the Lord. हालांकि वो पहले से डिवोटी थे, but for the sake of this particular लीला that Krishna had orchestrated, तो वहां पे उन्होंने Parikshit Maharaj attained that mood of service, which means he attended devotion, bhakti to Krishna, while Shukadev Goswami was imparting that knowledge. And this stage of perfection is called Apavarga, or the perfect stage of liberation. Simple knowledge of liberation is material knowledge. जो सिंपल हम लोग मुक्ति का बात करते विदाउट भक्ति, it is normal material. It is basically material because that is ultimately towards sense gratification. Actual freedom from material bondage is called liberation. But attainment of the transcendental service to the Lord is called a perfect stage of liberation. Such stage is attained by knowledge and renunciation, and the perfect knowledge as delivered by Srila Shuka Goswami results in an attainment of the transcendental service of the Lord. तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं? Such stage is attained how? Knowledge and renunciation. तो Prabhupada does not just say कि यार emotion होना चाहिए, which unfortunately is wrongly believed. सिर्फ हम लोग भाव करते हैं, but भाव के लिए we are at a very initial stage. We are प्राकृत, कनिष्ठ, we are a very neophyte stage, और हम लोग भाव ऐसे जनरेट नहीं कर सकते. रियल मटेरियल वर्ल्ड में भी हम लोग किसी के लिए भाव जनरेट करना है, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, उसके लिए भाव जनरेट ऐसे ही होता नहीं कि हम लोग इमीडिएटली अटैच होते. दैट गोज थ्रू सम प्रोसेस. वो प्रोसेस में टेक सम small amount of time or more years, whatever it may be, but it takes some time, right? तो उसको it takes some time, तो उसको भाव जनरेट कर ले. तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली वी बिकम सेंटिमेंटलिस्ट.
So we have discussed about it, right, in our जब हम लोगों ने भक्ति वृक्ष किया था, जब सिर्फ हम लोग एक्शन करते, मे बी हम लोग सिर्फ नॉलेज प्राप्त करते विदाउट एनी इमोशन, वी एंड अप बिकमिंग ए रिचुअलिस्टिक। और हम लोग नॉलेज को साइड में रखते हैं और बोलते हैं सब भाव भाव है, इसलिए सिर्फ हम लोग भाव के पीछे रखते हैं, वी बिकम ए सेंटिमेंटलिस्ट। दोनों के डिसएडवांटेजेस है। तो रिचुअलिस्टिक में भाव नहीं होने की वजह से ही जस्ट एंड्स अप लाइक ए प्रिस्ट। तो कर रहे हैं, बस कर रहे हैं और कुछ नहीं, उसका भाव नहीं, भक्ति नहीं आ रहा है। एंड द सेंटिमेंटलिस्ट, उसको नॉलेज नहीं होने की वजह से, कृष्णा की वजह से, he ends up again just being taking emotions as primary source of bhakti, or he is led nowhere कि इमोशन, वी नो आवर इमोशंस, वो इधर कभी उधर जाते रहते हैं। सो इमोशंस आर नॉट गाइडेड, अनफॉर्चुनेटली इमोशन मिसगाइड्स आवर माइंड। सो यहाँ पे this and but when we maintain a balance between both of them, जब हम लोग नॉलेज को भी बैलेंस करते हैं और इमोशंस भी सही मायने में मैनेज करते हैं, देन इट बिकम्स डिवोशन। तो यहाँ पे भी प्रभुपादा इज वेरी वेरी क्लियर, he understands us, so he tells us कि भक्ति अगर करना है, start with knowledge and renunciation. Renunciation means looking everything in relation to Krishna, निर्बंध कृष्ण संबंध है। तो real renunciation, Rupa Goswami says, is anything when we relate everything in relation to Krishna, that is the real renunciation. Real renunciation not that कि सब छोड़ के हम लोग हिमालय गए, that is not real renunciation. Seeing everything in relation to Krishna is real renunciation. तो जब हम लोग renounce करते हैं, renunciation में करते हैं, and when we have the knowledge from a bona fide spiritual master, which is from a sampradaya, then that perfect knowledge will help us attain the transcendental service of the Lord. Again, Prabhupada is stressing on the word service of the Lord. So 3 devotees we learned, which is Prakrita, Madhyama, and Mahabhagavata, which is also referred to as Kanishtadhikari, Madhyamadhikari, and Uttamadhikari. Okay, this is one thing that we need to always remember. So Sutta Goswami did not take his, जो हम लोगों ने birth के बारे में बात किया था, so Sutta Goswami did not take his birth in a Brahmana family. He was born in a family of mixed caste or an agricultural low family. But because of the higher association, like Sri Shukadev Goswami and the great rishis of Naimisharanya, certainly the disqualification of inferior birth was washed away. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu followed this principle in pursuance of the Vedic usage, and by his transcendental association, he elevated many lowborn or those disqualified by birth or action to the status of devotional service and established them in the position of acharyas or authorities. ये सिर्फ बोला गया नहीं, इन एक्शन में भी काफी देखा जाए। यूजुअली कास्ट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन देते हैं। सो अवर 500 ओल्ड हिस्ट्री टू बी, मतलब अगर भागवतम को सब लोग माइथोलॉजी बोलते रहेंगे, तो एटलीस्ट ये 500 ओल्ड जो हिस्ट्री है चैतन्य महाप्रभु का, तो उसमें भी उन्होंने काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए, मतलब उन्होंने एक्ट किए हुए जहां पे उन्होंने लो बॉर्न को या फिर डिस्क्वालिफाइड पर्सन को उन्होंने बड़े पोस्ट पे रखा हुआ है। सो एनीवन नोज एनी एग्जांपल दैट यू कैन थिंक ऑफ? चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे ऐसे किसको जो जो डिस्क्वालिफाइड था बाय बर्थ, उनको उन्होंने ऊपर लेके आए? वो प्रभु कुछ हरी से नाम था ना शायद। यस, हरिदास ठाकुर। हाँ, हरिदास ठाकुर, सॉरी प्रभु। Hari was nice one. So Haridas Thakur was not he was born in a Muslim family, and for Vedic culture follow करने के लिए they were not qualified. But Chaitanya Mahaprabhu, because Haridas Thakur was very devoted to Hari, so Chaitanya Mahaprabhu accepted him, and उन्होंने नामाचार्य, he made him one of the acharyas in our sampradaya. So this is he actually did it by action. He did not just say कि ऐसा करना चाहिए. He did actually did that by action. He clearly stated that any man, whatever he may be, whether a Brahmana or a Shudra by birth, or a householder or a mendicant in the society, in the order of the society, if he is conversant with the science of Krishna, he can be accepted as an acharya or a guru, a spiritual master.
irrespective वो कौन है. If he is speaking about Krishna, then he is Krishna conscious, then he can be accepted as a guru. Transcendental science or the science of Krishna has to be learned from the authorities, and when one preaches the science, he becomes still more qualified. So this is very interesting statement that Prabhupada makes. Let me repeat it. Transcendental science or the science of Krishna has to be learned from the authorities, which is good. But Prabhupada says when one preaches the science, he becomes still more qualified. So that is why we should start taking up this preaching directly, indirectly. Directly you can start getting your relatives या किसी को जमा करके you can start talking about small things. Start with भगवद गीता, और जो हम लोग ने जो किया था भक्ति वृक्ष का, या फिर दूसरा कोई बुक रहेगा प्रभुपाद छोटा, we can actually start with that small relatives. या फिर indirectly हम लोग का उतना टाइम नहीं, then we should start connecting other people टू ऑलरेडी वर्किंग सत्संग, जो ऑलरेडी सत्संग चल रहा है वहां पे उनको कनेक्ट कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट प्रीचिंग. क्यों एंड ऑफ द डे उसको जैसे हम लोग यहाँ पे कोई लाके ब्रोकरेज मिलता है, राइट? तो कृष्णा के वक्त भी जब हम लोग कृष्णा के इसमें हम लोग किसी को कनेक्ट करते हैं, वी ऑल्सो गेट ब्रोकरेज ओवर देयर. तो कृष्णा नेक्स्ट टाइम जब वो डिवोटी बन जाता है तो कृष्णा से अच्छा ये ममता माता जी से डिवोटी बना है, तो जब भी वो भगवान उनके बारे में वो डिवोटी याद करेंगे, वो ममता माता जी को भी याद करेंगे. सो वी गेट दैट ब्रोकरेज का हमें फीस मिलता है. एंड व्हेन कृष्णा रिमेंबर्स, देन दैट इज नथिंग मच बेटर देन दैट. So let me again stress, transcendental science or the science of Krishna has to be learned from authorities, and when one preaches the science, he becomes still more qualified. So Sutta Goswami had both the advantages. उन्होंने उधर भी सुना था शुकदेव गोस्वामी, और यहाँ पे preach भी कर रहे हैं. And thus undoubtedly he was completely freed from all the disqualifications of the low birth and mental agonies. The Ganga water is accepted as pure, and one can become purified after taking a birth in the water of the Ganga. But as far as the great devotees of the Lord are concerned, they can purify a degraded soul even by being seen by the low-born. What to speak of association? जो प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड है, जो कलियुग में काफी मुश्किल से मिलते हैं, बट जो प्योर डिवोटीज है उनको सिर्फ देखने से ही आपका उद्धार हो जाएगा. सो दे वर सो मच, गंगा में तो डुबकी मारना पड़ता है, बट उनको सिर्फ देखते ही आपके जो पाप है आपका उद्धार हो सकता है. सो दिस इज हाउ what you say glorious this pure devotees are, and that is why ऐसा कहा जाता है जो भगवान के जो भक्त है, जो प्योर डिवोटीज है, दे आर परमहंसस और महाभागवत, दे आर इवन मोर रेयर देन एक्चुअली सीइंग द लॉर्ड. ये शिव जी भी बोलते हैं एक जगह पे कि भगवान को तो भगवान मिल सकते हैं, लेकिन उनके प्योर डिवोटीज का दर्शन मिलना उससे भी रेयर है करके. सो एज फार एज the mental disease of the present generation are more acute than the bodily disease. It is quite fit and proper to take up the preaching of Srimad Bhagavatam all over the world without delay. क्योंकि यहाँ पे अभी mental disease जो है वो हम लोग देख ही रहे, it is even worse and they are very degraded. Kaliyuga, I mean, जब we compare to Satyuga starts looking as a mythology. It looks like a fairy tale. इतना degrade हम लोग हो चुके हैं कि हम लोग accept ही नहीं कर पा रहे कि इतना pious और इतना उच्च विचार हो सकते हैं कि we think that those are stories, mythologies, and we start finding fault in them as well. So this is how it is. और इतना degrade होने की वजह से being the soldiers of Srila Prabhupada, it is our duty that we start taking up this preaching, the service of preaching without delay. क्योंकि ऐसे उनको हम लोग जो सुनने वाले डिस्कस वाले काफी कम है as compared to the people who actually need it. तो जो बीमार है वो काफी बड़ा है. I mean they are too large in number, so we have to start take up preaching directly into whatever it may be, but we have to connect those people with Krishna. And that is what Srila Prabhu tells us. He has, let me put it that way, he has ordered us. So the Dvija Bandhu, or the less intelligent, uncultured man from higher caste, जो higher caste में ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण के घर पे अगर कोई जन्म लेता है लेकिन he does not have the quality of a brahmana, he is called Dvija Bandhu.
So this Dvijabandhu put forward many arguments against the lower caste men becoming Brahmanas in this life, because they were Dvijabandhus. They had no knowledge of the Vedic what to say, Vedic culture, Vedic knowledge नहीं होने की वजह से they started putting up their own theories. And then what they did कि lower, अगर by birth अगर lower caste में अगर कोई जन्म लिया है, they started putting up arguments to prevent them from getting to higher caste, to what to say, to put them in the position of a Brahmana. They argued that birth in a family of Shudras or less than a Shudra is made possible by one's previous sinful act, and that one therefore has to complete the term of disadvantage due to the lower birth. तो उनका लॉजिक क्या है, वो क्या बोलते हैं कि अगर तुम शूद्र के घर पे या फिर किसी लोअर कास्ट के घर पे अगर जन्म ले चुके हो, इट इज बिकॉज ऑफ योर लास्ट बर्थ, बिकॉज वी हैव सीन प्रभुपाद आल्सो मेंशन, अगर हम लोग अभी भक्ति करेंगे और भले हमारा भक्ति नहीं हो पाया पूरी तरह से, द लीस्ट व्हाट वी कैन गेट इज वी विल गेट बर्थ इनटू द फैमिली ऑफ ए ब्राह्मण जो लर्नड ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, या फिर जो रिच पीपल है उनके घर पे हम लोग बर्थ लेंगे. सो कृष्णा है विल बेनिफिट अस इन एनी वेज. सो यहाँ पे अगर वैसे उसी तरह से अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हम विल बी बोर्न इन लोअर स्पीसीज, एनिमल्स वगैरह, उसे थोड़ा सा बेटर वर्जन रहेगा अपने कर्म में, देन वी विल गेट ह्यूमन बॉडी बट इट विल बी इन द लोअर क्लास. तो इनका ये आर्गुमेंट है कि पिछले जन्म में तुम लोगों ने बुरे कर्म किए थे इसलिए तुम लोअर क्लास में हो, तो तुम्हें जो मिला है नेचुरली, जो शरीर या जो क्लास कास्ट मिला है, तुम्हें वो भुगतना है. तो तुम्हें वो कंप्लीट, यू कैन नॉट जस्ट एस्केप फ्रॉम इट. दैट इज व्हाट दे से. ठीक है. So to answer this false logician, Srimad Bhagavata asserts that one who chants the holy name of the Lord under the direction of a pure devotee can at once get free from the disadvantage due to a lower caste birth. तो भले जैसे यहाँ पे सुता गोस्वामी का नाम था, he was a lower caste by birth, but उन्होंने he took the association of Shukadev Goswami. He took the association of Shukadev Goswami, and that is why when he learned from him, he chanted the name of the Lord. So that is why शौनक मुनि और बाकी जब उन्होंने उसको उस व्यास आसन पे बिठाया, they gave him a very higher position, even more than them. और शौनक ऋषि और बाकी ऋषि कौन थे? They were brahmanas by birth, but they did not say अरे ये तो low caste वाला, इसको साइड में भगा. तो no, what they did is, yes, this person has got the association of a pure devotee and he speaks about Krishna, and that is why he is worthy of becoming becoming our spiritual master. तो उसको व्यास आसन में बिठा देते हैं. So offenseless chanting of the holy name of the Lord is transcendental, and therefore such chanting can at once purify one from the effects of all kind of previous sins. This offenseless chanting indicates that one has fully understood the transcendental nature of the holy name and thus surrendered unto the Lord. The holy name of the Lord is as powerful as the Lord, because there is no difference. Actually, there is no difference between Lord and the holy name. जब हम लोग सच्चे प्योर मन से जब हम लोग कृष्णा ऐसा बोलते हैं, it is as good as we are in connection with the Krishna in his form. The holy name of the Lord is as powerful as the Lord. In the last word of the Bhagavad Gita, the Lord asserts that one who surrenders fully unto him is protected from all the sins by the grace of the Lord. Since his name and himself are identical, the holy name of the Lord can protect the devotees from all the effects of the sin. यहाँ पे प्रभुपाद हम लोग को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं. A is equal to B is equal to C, therefore A is equal to C types. तो भगवान बोलते कि जो उनके शरण में आते हैं तो उनको वो पाप मुक्त करते हैं. ठीक है. और भगवान और उनके नाम में डिफरेंस नहीं. हम लोग सारे शास्त्र में देख रहे हैं उनके क्वालिटी इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, उनके क्वालिटी उनकी फेम में कुछ डिफरेंस नहीं है. सो when we surrender unto Krishna as a person or this name, there is no difference between them, and that is why he, at the least, Krishna can free us from our all the sins. Thus the supreme personality of Godhead is full in himself, and he has nothing to accept from anyone else, including the great demigods like Brahma. Other asks for favor or for the goddess of fortune, and despite such prayers, she declines to award such favor. But still, she renders service unto the supreme personality of Godhead, although he has nothing to accept from her.
the personality of Godhead in his Garbhodakshai Vishnu feature begets, Garbhodaksha मतलब second वाला जो हर एक यूनिवर्स में वो एंटर करते हैं, begets Brahma, the first created person in the material world, from his level lotus stem and not in the womb of the goddess of fortune, which he eternally engaged in his service. तो ब्रह्मा को जब जन्म दिया था तो उन्होंने अपने खुद के नेवल से कमल निकाल के ब्रह्मा को जन्म दे दिया. He did not have to depend on any other person for begetting a child. In our case, this is not possible, and that is the limitation that जो लोग कहते हैं कि हम लोग भगवान है करके. So if they can from their navel, if they can bring out a lotus और वहां से अगर बच्चा पैदा कर सकते, forget about ब्रह्मा, अगर normal भी कोई बच्चा पैदा कर सकते, then we can ठीक है still accept his authority, but this is not possible, right? It is only Krishna who can do that. He is not dependent on anyone for anything. That he has nothing to do means that he is does not mean that he is impersonal. So these are some of the instances of his complete independence and perfection. That he has nothing to do does not mean that he is impersonal. तो हम लोग बोलते हैं भगवान को किसी लेना देना नहीं, तो लोग क्या सोचते हैं, he is impersonal, इसलिए किसी से लेना और देना नहीं है करके, because he is not a person. But what it really means is he is independent, he is Swarat. That he has nothing, he transcendentally is so full of inconceivable potencies that simply by his willing, everything is done without physical or personal endeavor. He is therefore Yogeshwara, the Lord of all mystic powers. Mamta Mataji or Akimati, anyone wants to take up this slide? Hare Krishna Prabhuji, should I Hare take? Krishna. Yeah, Mataji, please. Yes, Srimad Bhagavatam 1.18. Who can be worthy of the name of the Supreme Lord but the personality Thank you, of God? Mataji. I was actually about to pass on to you. Thank you, Mataji. Please carry on. Okay, who can be worthy of the name of the Supreme Lord but the personality of Godhead, Sri Krishna? Brahmaji collected the water emanating from the nails of his feet in order to award it to Lord Shiva as a worshipful welcome. This very water, the Ganges, is purifying the whole universe, including Lord Shiva. Self-controlled persons who are attached to the Supreme Lord Sri Krishna can all of a sudden give up the world of material attachment, including the gross body and subtle mind, and go away to attain the highest perfection, the renounced order of life, by which non-violence and renunciation are consequential. O Rishis, who are so powerfully pure as the sun, I shall try to describe to you the transcendental pastimes of Vishnu as far as my knowledge is concerned. As the birds fly in the sky, as far as their capacity allows, so do the learned devotees describe the Lord as far as their realization allows. Once upon a time, Maharaj Parikshit, while engaged in hunting in the forest with bow and arrows, became extremely fatigued, hungry, and thirsty while following the stags. While searching for a reservoir of water, he entered the hermitage of the well-known Samika Rishi and saw the sage sitting silently with closed eyes. The Muni's sense organs, breath, mind, and intelligence were all restrained from material activities, and he was situated in a trance apart from the three: wakefulness, dream, and unconsciousness, having achieved a transcendental position qualitatively equal with the Supreme Absolute. The sage in meditation was covered by the skin of a stag and long. Compressed hair was scattered all over him. The king, whose palate was dry from thirst, asked him for water. The king, not received by any formal welcome by means of being offered a seat, place,
water, and sweet addresses, considered himself neglected, and so thinking he became angry. हरी बोल, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज का पास टाइम स्टार्ट होता है। सो आफ्टर सो गंगा यहाँ पे बताया गया कि कलेक्टेड द वाटर एमिनेटिंग फ्रॉम द नेल्स ऑफ हिज फीट इन ऑर्डर टू अवॉर्ड टू लॉर्ड शिव। एनीवन नोस नेल्स ऑफ हिज फीट मींस ये कौन सा पास टाइम की बात चल रहा है? Repeat the question, Prabhu. यहाँ पे जो पहले श्लोका में लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी कलेक्टेड द वाटर emanating from the nails of his feet in order to award it to Lord Shiva as a worshipful welcome. ये any idea ये कहाँ पे, ये कौन सा पास टाइम से रिलेटेड है? No guesses. No, Prabhu. So this is वामन देव का पास टाइम से। So जब वामन देव 3 स्टेप के लिए रिक्वेस्ट करते बलि महाराज से, and then he is taking the second step, तो वहां पे उनके नाखून से he scratches it the surface, जो ग्लो अपना यूनिवर्स का जो ग्लोब है उसको स्क्रैच करते हैं, एंड जो पानी है वो अंदर आ जाता है, जो अदरवाइज पूरे यूनिवर्स को कवर करने वाला जो पानी रहता है जहाँ पे महाविष्णु रिसाइड करते हैं, तो एक ड्रॉप अंदर आ जाता है, एंड दैट एक ड्रॉप इज व्हाट वी सी ओवर हियर। उसमें से एक ड्रॉप इज नॉट व्हाट वी सी गंगा रिवर। तो एक ड्रॉप जो आता है वो ब्रह्मा जी अपने वो कलेक्ट करते हैं, एंड देन ही पासेस ऑन टू लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा अपने जटाओं में उसे पकड़ के रखते हैं, और उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप वो छोड़ते हैं जटाओं में से। जब भागीरथ आता है तो भागीरथ जो प्रे करता है, वो जो वहां पे पास्ता में पूरा भागीरथ का, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वो शिव जी अपने जटाओं से उनको छोड़ते हैं वो पानी को, और वो पानी को छोड़ के वो दैट इज व्हाट वी सी गंगा ओवर, जो इतना फियर्स इतना पानी आ रहा है, दैट इज जस्ट वन बाय वन ड्रॉप दैट लॉर्ड शिवा इज रिलीजिंग आउट ऑफ द वन ड्रॉप, जो वामन देव का पैर का नखून लग के वो स्क्रैच आके वो पानी अंदर लीक हो चुका था। So this is and because it touched the nails of the Lord, it is becomes super purified and it is very worshipable. इसलिए शिव जी भी अपने सर पे उसे पकड़ के रखते हैं अपने जटा पे, so that he wants to relish that with the Lord. So Prabhupada says in 21 verse purpose, the conception of many God in the Vedic literature by the ignorant is completely wrong. ये कहाँ पे भी शास्त्रों में लिखा नहीं है, एंड पीपल हु से दैट हम सारे भगवान एक ही है करके, दे हैव नो बेसिस ऑन इट। उनके क्योंकि उनके पूर्वज जैसा बोलते थे, उनके पेरेंट्स जैसा बोलते थे, वो दे जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली। और अदरवाइज उनको हायरार्की पसंद है, उनको सिर्फ इक्वलिटी चाहिए, बिकॉज दे वर विक्टिम ऑफ इनइक्वलिटी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी प्रॉब्ली इन दर। तो वो सब सारी जगह भी इक्वलिटी का टेप लेबल लगाने का ट्राई करते हैं। So they don't understand there is hierarchy even in our society, जहाँ पे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, there is hierarchy. ऑफिस में CEO रहता है और नीचे पे there is an hierarchy. So when there is hierarchy in each and every society या community या group में, so how can we neglect the concept कि hierarchy ये पूरा universe और इसके creation में सारे में हो सकता है करके. So there are no multiple, there is only one and only one Brahman. The Lord is one without a second, but he expands himself in many ways, and this is confirmed in the Vedas. तो अगर हम लोग कुछ देख रहे हैं, that is हम लोग विष्णु के भी सारे अवतार देख रहे हैं, because he extends himself into different avatars, but there is only one Lord, that is Vishnu, Krishna. Such expansion of the Lord are limitless, but some of them are living entities. Anyone recollects इस living entity के अवतार को क्या नाम है, क्या बोलते हैं? No idea what type of avatar is it? प्रभु कौन, किसका अवतार? प्रभु का मतलब भगवान का? Sorry, like Krishna you are talking about? जो जीवास को यहाँ पे बताया गया कि some of them are living entities, some of the expansions of Lord are living entities, or they are empowered. Living entities are empowered. So anyone knows who are this? What is this category called? So they are called Shaktavisha Avatar. So Shaktavisha Avatar basically empowered living entities who have the, जैसे Parshuram is a Shaktavisha Avatar. Brahma is also Shaktavisha Avatar. Narad Muni is also Shaktavisha Avatar.
So they are powerful, as good as the Lord, but that is because Lord has empowered them for a particular reason. So Lord Brahma is generally one of the living entities, and Lord Shiva is the medium between the Lord and the living entities. In other words, even demigods like Lord Brahma and Lord Shiva, who are the chief among all the demigods, are never equal to or greater than Lord Vishnu, the supreme personality of Godhead. The goddess of fortune, Lakshmi Ji, Lord Brahma, and Lord Shiva are not independently powerful. They are very powerful, undoubtedly, but they are not independently powerful. This is something very important. They are powerful as the expansion of the Supreme Lord. यहाँ पे प्रभुदेव ये भी बोलते हैं, they are as powerful as the Supreme Lord, and all of them are engaged in the transcendental loving service of the Lord, and so are the living entities. One is Brahmaji is capable of creating the universe. Shivji also, he can destroy the complete creation. एक झटके में. So they are very, very powerful, extremely powerful. But still they are not independently powerful. That is what we need to understand. They are Ishvara, they are the controller, but they are not the ultimate controller. There are 4 sects. There are 4 sects of the worshipful devotees of the Lord, and the chief among them are Brahma Sampradaya. किसी को पता है 4 सेक्ट क्या है? 4 संप्रदाय क्या है जो बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक? 4 सेक्ट कोई बता पाएगा? एटलीस्ट उनके जो ये कौन है? एक प्रभु जी, एक माधव माधव गौड़िया भी है ना हमारा, we follow हाँ, तो the माधव और गौड़िया अलग-अलग है कि ये सेम है? माधव रामानुजन. ओके, तो एक ये प्रभु वाला पहला शंकर वाला करके भी है ना, शंकर. जो प्रभु ओके. कितनी मंद बुद्धि है हमारी, अरे स्पेशली ऐसे हम मेरी. डिस्कस नहीं करते इसलिए, और कुछ नहीं, नो वरीज. तो एक तो किसी ने माधवाचार्य का बात किया, राइट? माधवाचार्य. तो माधवाचार्य और गौड़िया जो है हम लोग बात कर रहे हैं, आर दे 2 डिफरेंट संप्रदाय? शुड आई काउंट इट एज 2 डिफरेंट और दे आर 1 संप्रदाय ओनली? One, I think, bro. अपना कौन सा है? गौड़िया, राइट? Yes. और अपने जो हायरार्की जो प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता में स्टार्टिंग में जो हायरार्की है, उसमें माधवाचार्य आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना. Yes. आते हैं. सो माधवा गौड़िया संप्रदाय इज आवर संप्रदाय. और इसके मेन कौन है? जो डीटी है, जो बेसिकली जो इनिशियल जिन्होंने नॉलेज पास ऑन किया, वो कौन है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम? टॉप अपने लेडर पे टॉप कौन है अपने संप्रदाय के लेडर में? हु इज एट द टॉप? चैतन्य महाप्रभु. कृष्णा से लिए, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु. at the top. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, but I mean he is somewhere down the ladder. मतलब हम लोग he has come 500 years back. I am saying who took knowledge directly from Krishna, who is at the top of this ladder? ये संप्रदाय के ladder में. अद्वैता. No, not Advaita. He is Brahma. Brahma is at the top, right? He took this knowledge directly from Krishna. तो अपना जो संप्रदाय है, Okay, that that way. is Okay, Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. We also call it the Brahma Sampradaya, Madhva Gaudiya Sampradaya. अलग-अलग नाम है, but this is Gaudiya Sampradaya is very specifically this 500 years जो basically चैतन्य महाप्रभु से आगे शूज आया पहन हुआ है. के हाँ, बास्केटबॉल but there प्रैक्टिस may be करके other expansion, other branches which may not be Gaudiya, but they may be from Madhvacharya and Brahma lineage. So that is possible. तो ये एक हो गया, ठीक है? एक हो गया ब्रह्मा से आया. दूसरे कौन है डीटी जिन्होंने डायरेक्टली नॉलेज लिया था? किसी ने रुद्र बोला था, शिवजी. So that is other संप्रदाय जो रुद्र से आता है, रुद्र संप्रदाय बोलते हैं. जो शिवजी से आता है, जो शिवजी ने डायरेक्ट कृष्णा से नॉलेज लेके he has आगे उन्होंने नॉलेज पास किया, रुद्र संप्रदाय. और तीसरा विवस्वान से भी है क्या? नहीं, विवस्वान से नहीं है. आर यू रेफरिंग टू भगवद गीता का कुछ उसमें बात कर रहे क्या? हाँ प्रभु जी. नहीं, विवस्वान से नहीं है. ओके. लक्ष्मी है ना ब्रो, एक लक्ष्मी संप्रदाय.
Yes, Lakshmi Sampradaya एक है. Kumar, I think 4 Kumara Sampradaya. 4 कुमार, हरि बोल. So Lakshmi Sampradaya is called Shri Sampradaya और 4 कुमार है उनको कुमार संप्रदाय बोलते हैं. So Lakshmi Sampradaya में we have Ramanujacharya जो लक्ष्मी संप्रदाय में. And these are the 4 संप्रदाय which are considered very authentic, जो कृष्णा से directly knowledge लेके, and some say that their reference is already mentioned in Padma Purana और Vishnu Purana. I myself have not read it, but that is believed by many people कि already it is being referred in some Puranas. So these are the 4 sampradaya, the 4 sects of worshipful devotees of the Lord, and the chief among them are Brahma Sampradayas, Raudra Sampradaya and Shri Sampradaya, descending directly from Lord Brahma, Lord Shiva, and the goddess of fortune, Lakshmi, respectively. ये 3 संप्रदाय हम लोग बात की. Beside the above mentioned 3 sampradayas, there is a Kumara Sampradaya descending from the Sanat Kumara. All of the 4 original sampradayas are still scrupulously engaged in the transcendental service of the Lord up to the date, and they all declare that Lord Krishna, Mukunda, is the supreme personal Godhead, and no other personality is equal to or greater than him. So these are the 4 sampradayas. कौन से थे? एक है ब्रह्म संप्रदाय, एक है शिवजी से आया हुआ रुद्र संप्रदाय, एक है श्री संप्रदाय लक्ष्मी से, और एक कुमार संप्रदाय जो सनत कुमार से आए हुए. So only the self-controlled can gradually be attached to the supreme personality of Godhead. Self-control means not indulging in sense enjoyment more than it is necessary. So Prabhupada does not here say कि पूरी तरह से बंद कर दो करके, because he understands his audience are basically grahasthas. So he's saying more than necessary, we shouldn't be engaged in sense enjoyment. And those who are not self-controlled are given over to sense enjoyment. Dry philosophical speculation is a subtle sense enjoyment of the mind. जो philosophy हम लोग काफी सारे व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड होते हैं, जहाँ पे काफी कुछ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट रहते हैं. अंधेरा आया, वो गया, दिस ऑप्टिमिस्टिक वर्जन देते हैं अपने लाइफ का. So it is dry speculation. They are all dry philosophers. So they do it because they enjoy do it. जैसे कोई गेम खेलता है, वीडियो गेम्स खेलता है, नेटफ्लिक्स देखते हैं, दे आर ऑल स्पेकुलेशन, दे आर ऑल सेंस एंजॉयमेंट, राइट? इंद्र तृप्ति है ऑफ आवर माइंड. तो वैसे ही ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन इज ऑल्सो people who enjoy this speculations, basically dry they may more बाकी जो सेंस एंजॉयमेंट के जो साधन है उसको भी वो धिक्कार देते हैं, बिकॉज दे लव डूइंग दिस ड्राई स्पेकुलेशंस. दे आर सो मच एंगेज इन इट. हम लोग यूजुअली देखते हैं साइंटिस्ट वगैरह देखते हैं. सो हम लोग यूजुअली साइंटिस्ट कैसे देखते हैं? चश्मा पहने हुए, बाल बिखरे हुए, पूरा इसमें इन्वॉल्व है, और उनको उनके लाइफ में कोई अगर वी आर टॉकिंग मेल साइंटिस्ट, देन दे हैव नो फीमेल इन देयर लाइफ, पत्नी नहीं, या फिर कोई गर्लफ्रेंड या कोई नहीं उनके लाइफ में, पूरे एकदम नर्ड टाइप, पूरे एंग्रोस रहते हैं. We must have seen these images, right? So this is because they find this this knowledge more what you say luring to their mind than any other thing in this world. So dry speculation is like there is a subtle sense enjoyment. Sense enjoyment leads one to the path of darkness. Self-control is actually achieved not by artificially stopping the senses from the material enjoyment, but by becoming factually attached to the Supreme Lord, by engaging one's unalloyed senses in the transcendental service of the Lord. Senses को artificially stop करना, basically it is not possible at all. Mind को stop करना that is not possible. जैसे हमारे सेंसस पैर है तो या फिर हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट को पंप करने से रोक नहीं सकते, बिकॉज हार्ट का काम ही पंप करना है. विदाउट दैट हार्ट इज ऑल डेड. तो उसी तरह से माइंड का काम ही है किसी चीज में सोचना, एंगेज करना, चंचल रहना. इट इज द नेचर ऑफ द माइंड. सो उसको बंद ऑटोमेटिकली शट डाउन नहीं कर सकते. इट इज लाइक शट डाउनिंग योर हार्ट बीट. पंपिंग, शट डाउन योर पंपिंग मीन्स किलिंग योरसेल्फ. तो माइंड को ऐसे हम लोग शट डाउन नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. आर्टिफिशियली कर नहीं सकते. आर्टिफिशियली मे बी कुछ टाइम के लिए यू मे बी आर एबल टू पॉज थिंकिंग, पॉसिबली ये भी पॉसिबल है अगर कर भी पाए. बट देन अगेन
खत्म हो जाते हैं। वी हैव सीन द स्टोरी ऑफ विश्वामित्र, राइट? वी हैव हर्ड हिज स्टोरी। विश्वामित्र ने 1000 साल तक ही डिड दिस आर्टिफिशियल कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, 1000 of years। और ऐसे होने के बाद सिर्फ आई थिंक इट वाज मेनका, राइट? सो या फिर जो अफसर रहेगी, उनके सिर्फ पैर के पेंजन के आवाज मात्र से उनका मन पूरा चंचल हो गया, एंड ही गॉट अट्रैक्टेड टू हर एंड मैरिड हर। और so this is I mean the person who has been worshipping, who has been uh, artificially trying to control the mind for 1000 of years, जस्ट एक पेंजन के आवाज से, एंकलेट के आवाज से उसका माइंड कंट्रोल से चला गया बाहर। व्हाट टू स्पीक अबाउट पीपल जो हार्डली 10 years, 15 years, 20 years, 30 years हम लोग आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, एंड दैट टू वी कैन नॉट इक्वेट दैट 10 years ऑफ द सेजेस अर्लियर। दे वर, वो सत्ययुग में था, इट वाज वेरी पावरफुल। दे बाय नेचर हैड ए बेटर what you say less chanchal version of mind than what we have in Kali Yuga। वहाँ पे अलग अलग साध्य ये माध्यम ने, जहाँ से जैसे व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ट्विटर नहीं था, तो उससे ऑलरेडी उनका माइंड थोड़ा सोबर ही था देखा जाए तो। अभी ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अपना माइंड ऑलरेडी वी हैव ट्रेन्ड अवरसेल्फ to become chanchal, even more chanchal। तो अभी ऐसे केस में if we try to do that, that is not at all possible। We cannot do that। So so the only way where we can do is basically connect them to the higher, give them a higher taste। It is like a monkey। जब एक एग्जांपल जो बोला था, इस मंकी काफी चंचल रहता है, इधर उधर कूदता है, भागता है। सो मंकी को शांत हम लोग बिठा नहीं सकते बैठ करके, तो लेकिन उसको अगर शांत बिठाना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गिव हिम समथिंग हायर टेस्ट दैट इज कंसिडर फॉर द मंकी, विच इज ए बनाना। जो बनाना देगा तो क्या करेगा, एक जगह बैठे और बनाना ओपन करके खाते रहता है, राइट? ही कीप सिटिंग ऑन प्लेस। तो उसी तरह से वी हैव टू गिव समथिंग विच इज हायर taste than this material, and the only thing that is higher than the material is the taste of Krishna's love, devotional service। So the senses cannot be forcibly curbed, but they can be given proper engagement, जैसे बंदर की तरह। So purified senses therefore are always engaged in the transcendental service of the Lord। This perfectional stage of sense enjoyment is called Bhakti Yoga। So what is Bhakti Yoga? This is called Bhakti Yoga, जहाँ पे हमारे सारे senses कृष्णा के सर्विस में लगाते हैं। So those who are attached to the means of Bhakti Yoga are factually self-controlled and can all of a sudden give up their homely or bodily attachment for the service of the Lord। This is called Paramahamsa stage। जैसे परीक्षित महाराज का स्टेज था, तो कुछ लोगों माना कि परीक्षित महाराज जैसे निकले वहां से, और जब उनको शाप मिला, ऐसा पता चला, he did not even enter his palace। वो पैलेस के गेट पे थे, उनको वो खबर मिली, तो इमीडिएटली क्या किया उन्होंने, उधर ही उनके जो राजा के ड्रेस वगैरह थे वहां पे उन्होंने छोड़ के ही लेफ्ट इमीडिएटली विदाउट सेइंग बाय। अरे अपने पत्नियों को मिलके बोला कि अपना ख्याल रखो, ये करो, या फिर पत्नियों के साथ टाइम बिताया नहीं, या फिर उन्होंने या फैमिली मेंबर से लव्ड वंस के साथ ये उनको बताने, देख भाई ये LIC पॉलिसी में जाने के बाद उसका एनकैश कर लेना। सो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? तो ही न्यू दैट मरने के बाद दिस पीपल, फैमिली मेंबर्स who were very dear to him, undoubtedly they were loved, they all loved him। पूरा प्रजा उनको प्यार करता था, what to talk about just family members। But at the time of death no one will be of any help, so he has now to take care of himself, and that is what any common sensical person can do, right? So what he did, वहां पे छोड़ के वो he saw the hand of Krishna in that, basically that we'll see in coming chapters and sloka। He saw the hand of Krishna in that, and he immediately left everything and he went back to this to the bank of Ganga, so to think to meditate on Krishna। So this is what all of a sudden वो लोग दे सकते हैं। I mean he never did it earlier, he was doing as because he had the responsibility of a king, so as a king, as a family member, he was taking care of the responsibility। But when there was a time कि उसे वैसे भी वो सब छोड़ के जाना ही है, it was not that वो उसको छोड़ के जाना 7 दिन में, so he wanted to use this
days appropriately that a dying person should actually do. So he was actually leading an example for us, and there are many such examples. So मरते वक्त they in Bhagavatam there are many such मरते वक्त they actually give up everything, they go to the forest and then they meditate on Krishna. And that is वानप्रस्थ में ये वो करते जब हम लोग फैमिली अफेयर्स से हम लोग जब बाहर निकलते हैं, जब फैमिली अफेयर हम लोगों ने किया गृहस्थ में किया, सो देयर इज अ टाइम दैट यू हैव टू नाउ से यू हैव टू नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और फैमिली का किया रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने सही तरीके से आपने फुलफिल किया. नाउ यू हैव टू गो टू द फॉरेस्ट, नाउ एंगेज इन कृष्णा and get ready for what is awaiting you, that is death. Get ready for that. If you continue to serve your family, death आएगा लेके जाएगा, you will again take back in some other family, वही करते हैं, and then you will be in this cycle. You will never get out of this cycle of life and death. So for these years where you are grasta, you actually did your duty. So there is the but now when you know that ठीक है अभी now it is time that our kids everything have taken up their responsibilities, now technically हमारे इस पे कुछ जरूरत नहीं है. We actually are not required as a responsible, I mean कुछ ड्यूटी वगैरह कुछ करने के लिए हमारी कुछ जरूरत नहीं है. At that time our only duty is to serve Krishna and we should engage. अभी हम लोग को जंगल में जाने की जरूरत नहीं है because that is not possible, but otherwise we have to slowly जो family responsibilities है उनसे हाथ बाहर निकालना, because there are people who can take care of that responsibilities and we have to get engaged in the service to Krishna. That is the vanprasth in this age that we can do. जरूरी नहीं उनको छोड़ के रहना कुछ नहीं, we can still be with them, but our prime objective is service to Krishna. We can our family members को भी हम उसमें engage कर सकते हैं, हमारे बच्चों के बच्चों को वो age पे we can engage them in service to Krishna, and that is how we can do our vanprasth service in true sense. So senses cannot be forcibly, but they can be given proper engagement. So those who are attached to the means of bhakti have actually self-control and all of a sudden can give up their homely or bodily attachment in the service of the Lord, and these people are called Paramhamsas. Real non-violence means freedom from envy. This is a very interesting statement Prabhupada says. Real non-violence means freedom from envy. जब हम लोग वायलेंस मतलब सिर्फ किसी को मारना, फिजिकली मारने को ही बोलते, बट हम लोग मेंटली भी जब एनवियस रहते, वी आर काइंड ऑफ एज गुड एज हर्टिंग दैट पर्सन सेटली, राइट. उसके हम बुरा सोचते हैं, उसका बुरा हो करके वी विश फॉर दैट. सो जब हम लोग उससे भी दूर जाएंगे, देन दैट इज वी कैन से दैट वी आर एक्चुअली फॉलोइंग नॉन वायलेंस इन रियल सेंस. इन दिस वर्ल्ड everyone is envious of his fellow beings, but a perfect Paramhamsa loves every living being in relation with the Supreme Lord. Real renunciation, being completely given up to the service of the Lord, is perfectly non-envious. तो जब हम कृष्णा के लिए कुछ सर्विस के लिए renunciation का, that is completely non-envious. He means this means perfect dependence on the God. Every time being is every living being is dependent on someone else because he is made so. वो हम लोग देखते हैं, हम लोग खाने के लिए भी हम लोग एक दूसरे जीव के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट. देयर इज नो वन इज इंडिपेंडेंट. हम लोग खुद के मुंह में खाना बना के हम लोग पेट में डालते नहीं है. वी आर डिपेंडेंट ऑन एवरी अदर लिविंग बीइंग इवन फॉर फूड, व्हाट टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स. दैट इज हाउ इट इज मेड. So renunciation means renouncing when we are in a situation where we are dependent of every other living being. So in that case, renunciation means we cannot completely get away from. We have to be still dependent on someone, right? अगर हम लोग जंगल जाके बैठेंगे, पेड़ का फल खाना होगा, कुछ भी, we still have to be dependent on someone. So सिर्फ दूसरों से डिस्टेंट करना और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, if we call renunciation, then we always will be dependent on every other living being. So what Prabhupada says, renunciation means renouncing one's dependence on the condition of the material nature and thus becoming completely dependent on the mercy of the Lord. मतलब basically sense gratification को छोड़ के we focus on how to give pleasure to the senses of the Lord and thus becoming completely dependent on the mercy of the Lord. Real independence means complete faith in the mercy of the Lord without dependence on the condition of the matter.
when we are in this stage, we will be free from anxiety. हमें इस अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है, जो जो भौतिक जो दुख है, उससे भी हम दूर रहेंगे, because we will be dependent on the mercy of the Lord. जैसे प्रहलाद महाराज का केस था, सो काफी सारे उनके ऊपर काफी सारे डिफिकल्टीज आए, काफी सारे उनके ऊपर वेदना आए, लेकिन उन्होंने क्या किया? He was not dependent on that condition. He was only dependent on the mercy of the Lord, and he was in a very pleasant stage. He was in a non-anxiety state in all of this situation that he had to pass through. So this is real independence. This is real liberation. This is what you say, real renunciation. Save not physically, renounce from other things, but also mentally, being non-envious, being free from the condition of the independent from the condition of this material existence. This is called real independence. So we will take a pause here. 22nd हम लोग ने वर्ष तक खत्म किया. And any questions? Anyone wants to add something as far as we discussed today before we end the recording? Jay. So I take it as no questions. So Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.